Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 8. We are learning Unit 2. Its title is Social Media Today. Our SLO for today is analyze that text comprises a group of paragraphs that develop on the main idea addressed by the writer throughout the text. What does it mean? बेटा आज हमने ये एनालाइज करना है कि जो हमारा टेक्स्ट है जिसमें एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं, उन सब पैराग्राफ्स का मेन आइडिया यानी थीम जो है वो सेम होता है। मीन्स हम एक थीम को डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड करके एक बहुत डिटेल्ड अपना जो थीम है उसको प्रेजेंट करते हैं। This is what we are going to learn through this SLO. And before this, in English for grade 7, you have already learned how to discuss a larger text to recognize each paragraph as a separate meaningful unit of expression with its own topic sentence and supporting details. What does it mean? अब हमने 7 तक हम ये ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं कि हर पैराग्राफ में एक टॉपिक और एक टॉपिक सेंटेंस होता है, एक थीम है और टॉपिक सेंटेंस है। इट मीन्स कि अगर उसी थीम के ऊपर हम मजीद ना व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न वन स्टेप अहेड कि अगर उसी थीम के ऊपर हमने एक से ज़्यादा पैराग्राफ लिखने हैं तो भी हम पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे और अपने उसी वट एवर वी आर गोइंग टू राइट उसी टेक्स्ट को डिफरेंट पैराग्राफ्स में हम डिवाइड करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, वील प्रैक्टिस इट इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह मेंशंस इन कुरान सूरह अल-फुरकान वर्स 32, and those who disbelieve say, why was the Quran not revealed to him all at once? Thus it is that we may strengthen thereby your heart, and we have spaced it distinctly. Yes, my dear students, बेटा ये खूबसूरत वर्ड्स हमें क्या बता रही है कि कुरान एक ही मर्तबा में नाजिल नहीं हुआ था। कुरान ऑलमोस्ट 23 years में स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली वन आफ्टर द अदर जितने भी कुरान के अहकामात हैं उनको ग्रेजुअली डेवलप किया गया था, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ जिहाद, जब मुसलमान मक्का में थे तो उनको वट एवर वॉज गोइंग विद देम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कहते थे आप सब्र से काम लें। दे वर नॉट अलाउड टू फाइट बैक, राइट? फिर जब मुसलमान मदीना में हिजरत करके वहाँ एक इस्लामी रियासत कायम हुई, मुसलमान स्ट्रॉन्ग हुए, तो वहाँ पर फिर उनकी ऑफेंसिव, पहले डिफेंसिव वार्स थी, फिर जब उनकी स्ट्रेंथ बनी, उनकी एक एज अखुवा उनका एक डेवलप हुआ और पूरी दे बिकेम अ प्रोमिनेंट ग्रुप, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब जो हमारी स्टार्ट के गज़वात हैं आप देखें वो सारे डिफेंसिव थे। देन अ टाइम के जैसे हमारा पहला गज़वा बद्र, मुसलमानों ने अटैक तो नहीं किया था, उन पर अटैक किया। सो बेटा ये देखिए कुरान से हमें हर चीज़ सीखने को मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना ग्रेजुअली मुसलमानों को स्ट्रेंथन किया और एक टाइम ऐसा आया कि वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गए। सो What we are learning from this कि हम कोई भी चीज़ जो करते हैं उसको ग्रेजुअली करते हैं। What does it mean? अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए क्या मुश्किल था पूरा कुरान? नाउज़ बिल्ला कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कर सकते थे ना कि पूरा कुरान एट अ वंस नाजिल हो जाता। लेकिन किसी भी चीज़ को जब आप समझाना चाहते हैं और प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो कुरान ही हमें तरीका बता रहा है क्या करना है, ग्रेजुअली वन आफ्टर द अदर। ओके, सो दिस इज हाउ वट एवर वी आर डूइंग वी शुड फॉलो इट, एंड वट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक दैट। आपने पहले क्या करना है, टीचर काइंडली डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स एंड स्टूडेंट्स विल अंडरलाइन टॉपिक सेंटेंस or theme of each paragraph on page number 11. So all the students beta kindly open your books on page number 11. There are multiple paragraphs. आपने हर paragraph का topic sentence या theme जो भी आपको वहाँ पर appropriate लगता है उसको underline करें. So pause the video, enjoy this activity and then come back. Yes, my dear students, are you done with it? Okay. Now, why we need to learn it, by the way? It's easy, smart, huh?
because we are going to write messages, और हम उसको ज़्यादा thoughtful manner में, because we have learned paragraph writing. Now alhamdulillah we are learning essay writing as well. तो हमने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को कैसे स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है. दिस इज व्हाट बाय रीडिंग वी अप्लाइड एंड बाय राइटिंग वी विल प्रैक्टिस इट. ओके, ऑलराइट. सो अभी जो आपने इस पेज 11 में पैराग्राफ्स को डिवाइड किया, दिस इज पैराग्राफ 1 2 3 4, right? And you have underlined the topic lines and themes of this paragraph. Now can you tell me all the paragraphs addressing one theme? पहले तो आपने ये बताना है, ठीक है? आपने इनको अंडरलाइन कर लिया, मुझे बताइए कि क्या इनका एक ही थीम है, और अगर एक ही थीम है तो वो क्या है. Pause the video, answer this question to your teacher and then come back. Yes, my dear students, good. We have learned this page yesterday and we know the theme of these paragraph is technology. The theme of this paragraph is media. We are talking about media, different kinds of media, and we are talking in detail. You see, हमने एक पैराग्राफ में उसके बारे में कुछ बात बताई है, फिर उसी से रिलेटेड दूसरे पैराग्राफ में. दो वी आर डेवलपिंग each paragraph on same theme but the information. तो इसी तरह this is how we write an essay. Introductory paragraph है, फिर उसमें उसकी body paragraphs आते हैं, all the linked information, examples, whatever we know, facts, opinions, everything, and then we conclude it. This is how बेटा हम paragraphs पर text को, और आपने जब भी कोई text multiple paragraph का है, आपने ये अपना text को analyze करना है कि हम किस तरह से different texts को different paragraphs में divide करते हैं, right? Okay, और हम आज भी इंशाल्लाह इसको practice करेंगे. So let's start reading on page number 12. हमने यहाँ कल अपनी reading stop की थी. From this very point, I'm going to start read. Listen carefully. Despite having such unique advantages, social media is considered to be one of the most harmful elements for society. If its use is not monitored, and it can lead to crucial consequences. What does crucial mean? Critical. And in spite of, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, बावजूद इसके, monitor, to watch and check something, and consequences is results or outcomes. So what this paragraph is telling us, if media, social media is not properly used, it's not controlled, so it can make a disaster. So what is the message? We should use social media carefully. Okay. How can social media harmful if it is not monitored? Pause the video, answer this question, and then come back. Yes, my dear students. While using social media, certain rules should be followed. And what those rules are? Number one, we should be careful about the privacy of others. We should not leak messages, means we should not share messages or pictures of someone without their permission. We should also avoid giving negative remarks or using abusive language in the comment box. बेटा ये तो वैसे भी unethical है ना, कि हम कोई बुरा लफ्ज़ use करें. How we can be abusive? So we should be very careful about it. And abusive means rude or offensive. We should not spread fake news or rumors. Rumors क्या होती हैं? A piece of information that may not be true. अफवाहें without verifying. किसी information को हमें नहीं spread करना चाहिए. If someone sends you some kind of wrong message, it is best to avoid them. अगर कोई wrong message करे तो उसको avoid करना है. In such situations, you can block the user immediately. Sender जो आपको भेज रहा है उसको फौरन से block कर दें. We should not hurt someone's feelings by sending them wrong news. In short, social media has both advantages and disadvantages. However, it all depends on the user at the end. The youth in particular must create a balance between their academic performance, physical activities, and social media.
Excessive use of anything is harmful, and the same thing applies to social media. Therefore, we must strive to live a satisfying life with the right balance. So this is how, beta, we have learnt different paragraphs. We have observed about social media and media, different paragraphs. Now you pause the video, read the text again, and there I brought an activity for you. What you are going to do, read the text again and analyze. Now you have to analyze what that text comprises of a group of paragraphs that develop on main idea addressed by a writer throughout the text. आपने बहुत इसको critically देखना है कि हमारे टेक्स्ट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मीडिया के accordingly नहीं है. So I hope now you can, and if you find anything, you can criticize and tell to your teacher. Okay, so very actively, proactively do this activity. Pause the video, complete the activity, and then come back. Yes, my dear students, are you done with it? Good job. Now you see, beta, this is how we will, if you find any fault, you will not do it. And if whatever good you learned, you will apply it on your writing. Okay. So it's time for the comprehension. Rest of the questions of your comprehension, you will tell the answers, write the answers in your notebook. And when you are done with this task, kindly come back. Yes, my dear students, now you will, here are multiple choice questions. You have to do it on your book. So pause the video, do this question on your book, and then come back. Yes, my dear students, it's time for your homework. And what is your homework? Once again, I brought multiple paragraphs. And once again, beta, you will read it and apply, analyze, are all the paragraphs on the same theme. You will do it at home. And here I brought a worksheet for practice in your classroom. Teachers, kindly take prints of these worksheets and provide to students. And once again, what we are going to do, we are going to read the text to analyze that all the paragraphs are referring to the same theme. So kindly provide printed worksheet to students and practice it well. That's it for today. Tomorrow we'll learn further. Till that time, take care. Thank you and Allah Hafiz.